Students, and our today's topic is the combination of capacitors. So first we're gonna go with the definition. So when two or more capacitors are joined together in an electric circuit, they form an assembly which is known as the combination of capacitors. So basically जब हम दो या दो से ज़्यादा capacitors लें and उनको join करें आपस में, and then we connect them with the battery to form a circuit, then that assembly will be called as the combination of capacitors. Alright, now अब हम इन combinations को कैसे represent करते हैं, right? So to represent any kind of circuit, we use symbols to identify different kind of electric components, and these components are connected together by lines which represent wires of the circuit. All right, so here first we are gonna study about series combination of capacitors, and this is today's topic about the combinations of capacitor. So this in the series combination, each plate of one first capacitor is connected to the to one plate of another capacitor. In this case, this second plate of the first capacitor is connected to the first plate of the second capacitor, and the second plate of the second capacitor is connected to the first plate of third capacitor. So actually they are connected end to end. Each plate is actually directly connected to the other plate. Okay, so this is called the series combination of capacitor. Remember that whenever you see these kind of symbols, I have drawn it using a yellow marker and a green marker, but आप इन्हें पेन यूज़ करके भी बना सकते हैं. मैंने इन्हें ऑरेंज और ग्रीन इसलिए बनाया ताकि पता लग सके कौन सी प्लेट पॉजिटिव है और कौन सी प्लेट नेगेटिव है. ओके, सो व्हेन वी एक्चुअली connected with our battery, what happens is that this battery will transfer current or charges to this plate, okay, and suck out the charges from the other, thus providing a net positive charge to this plate and net negative charge to this one. Similarly, a net positive charge will be developed on this plate, and a similar net negative charge will be developed on this plate, and the same cases with the third capacitor. These capacitors are named as C1, C2 and C3. Now अब हम क्या देखते हैं, हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, एक सीरीज में कनेक्ट हुए हैं. सो हमारे पास करंट के फ्लो के लिए कितने पाथ्स हैं? जस्ट वन पाथ. वी जस्ट हैव वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट. When we have only one path for the flow of current, what happens is that the charge stored on each plate will be same as on the other plate. Okay, so in this case जितना चार्ज इस प्लेट पर स्टोर होगा, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, उतना ही इस प्लेट पर भी स्टोर होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ. यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी उतना चार्ज स्टोर होगा, यहाँ पर भी उतना चार्ज होगा, सिर्फ चार्जेस के साइंस का डिफरेंस होगा. ओके, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट. हम यहाँ पर चार्जेस के साइन को डिस्कस नहीं करें बिकॉज वी आर टेकिंग अ कैपेसिटर एज अ होल कॉम्पोनेंट. हम प्लेट्स को अलग अलग कंसिडर नहीं कर रहे. दिस सिंबल यहाँ पर जो मैंने कलर मार्कर से बनाया है, दिस सिंबल या पेन से भी बना सकते हैं, इज नोन एज द सिंबल ऑफ ए कैपेसिटर. ओके, सो ईच कैपेसिटर स्टोर्स an electric charge which is equal to Q. Alright, and this charge is same for each capacitor. The value of these charges will not be different. Okay, in charges की value same होगी. So that's why we have written over here Q equals to Q1. This is Q1 equals to Q2 equals to Q3. So ये सारे चार्जेस आपस में इक्वल हैं. इट मीन्स दैट हर कैपेसिटर पर एक जितना चार्ज स्टोर होगा.
the quantity of charge will not be different because the current is not different. Alright, so if the current is the same all across the wire, thus the charge will be same all across the wire. Now for second equation, we have to be very clear about it, that when potential difference is applied by the battery, the potential difference on first capacitor and potential difference on second capacitor and potential difference on third capacitor will be different. Okay, because this is consuming the voltage, this is consuming the voltage, this capacitor is also consuming the voltage. So the values of voltage for each capacitor will be different. That's why we have written that V, the applied voltage, is equal to the potential drops across all these थ्री कैपेसिटर्स. ओके, तो जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा उतना ही ज़्यादा ये कंज्यूम करेंगे. ओके, सो when we add up these three voltages we get the resultant voltage. This is our second equation and our main equation. Okay, so now we have studied that since C equals to Q by V, C is the capacitance of the capacitor, C equals to Q by V, we can also write it as, this is a symbol of implication. It means this implies that, or this means that. C equals to Q by V. This implies that V equals to Q by C. We have just switched the position of C and V. Okay, so V equals to Q by C. Now, using this equation for each capacitor, each voltage can be written as, now V1 हमने यहाँ पर C1 के लिए V1 अलग ले लिया, C2 के लिए V2 अलग ले लिया, C3 के लिए V3 अलग ले लिया. ओके, सो V1 इक्वल्स टू Q बाय C1, V2 इक्वल्स टू Q बाय C2 एंड V3 इक्वल्स टू Q बाय C3. यहाँ पर हम लोगों ने इसकी Q के साथ 1, 2 एंड 3 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज Q हैज़ द सेम वैल्यू. Q1 भी Q के इक्वल है, Q2 भी इक्वल है एंड Q3 भी Q के इक्वल है. ओके, so V1 equals to Q by C1, V2 equals to Q by C2 and V3 equals to Q by C3. V3 भी चेंज होगा, C3 भी चेंज होगा, V2 भी चेंज होगा, C2 भी चेंज होगा, and V1 भी चेंज होगा, C1 भी चेंज होगा, but Q will stay the same throughout. And also हमने V1 भी निकाल लिया, V2 भी निकाल लिया, V3 भी निकाल लिया, but V भी निकालना है. So this V will be equal to Q by C equivalent. What is C equivalent? C equivalent is the net effect of all three capacitors. जैसे V is the total voltage, Q here is the total current, and total current is the same as any other current. Okay, so the total charge is same as any other charge at any point in this circuit. So Q is the total charge, V is the total voltage, and C equivalent is the total capacitance, the net effect of these capacitance. यानी ये तीनों मिलके कितना capacitance देगी? That is C equivalent. That is why we do not just write C here. We write C equivalent. So that it is the net effect of these three capacitors. Now putting V1, V2, V3 and V in equation number 2. इनकी वैल्यू हम उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे. It would become V की जगह Q by C equivalent equals to V1 की जगह Q by C1, V2 की जगह Q by C2 एंड V3 की जगह Q by C3. अब हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पर Q कॉमन आएगा, सो हम Q को कॉमन ले लेंगे. Q by C equivalent equals to Q कॉमन ले लिया एंड ब्रैकेट में हमारे पास 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 आ गया. Now Q and Q would cancel each other and we are left only with 1 by C equivalent equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. This is the equation for the equivalent capacitance in a series combination of capacitor. Okay, so here हमें क्या पता चलता है? C equivalent का मतलब है अगर हमारे पास C1 की वैल्यू हो, C2 की वैल्यू और C3 की वैल्यू, हम इसे इक्वेशन में पुट करेंगे and we can calculate the value for C equivalent, which is the you can say capacitance
which when connected to the battery gives the exactly same capacitance as these three combined capacitors. Okay, so जब हम इन तीनों कैपेसिटर्स को अटैच करें तो जो भी कैपेसिटेंस आएगी, ओके, सपोज लाइक 3 फैरेड हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड आती है, ओके, सो इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट 3 माइक्रोफैरेड आएगा. इट मीन्स दैट अगर हम 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर इसी तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ओके, देन इट विल गिव दिस सेम रिजल्ट्स. हम इन तीनों की जगह 3 माइक्रोफैरेड का एक यूज़ करें या फिर इन तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ यूज़ करें, it would give us the same effect. So this is why it is called the C equivalent. It is the equivalent capacitance of these three capacitors. And for if we do not have 3 capacitors, we have 4 capacitor or 5 or etc. and so on. हमारे पास जितने भी कैपेसिटर उसको हम इसी तरह से अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, and that is how we can calculate the capacitance of all these capacitors. Okay, there should be Cn written over here. Okay, it shouldn't be C equivalent, it should be Cn. So the combined effect of all these capacitors is given by C equivalent, and this is our equation that we need to calculate the equivalent capacitance in case of series combination. Thank you so much, everyone.